Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thank you all the participants for joining this classroom. We all are well aware that due to coronavirus situation, the campuses are closed, and that's why these online class sessions have been conducted in the universities. Although this is not an ideal environment for learning, but still we have to continue learning. Maybe in this shape or another shape, but we have to continue. The learning process should continue. Before proceeding further, हमने इस कोरोना वायरस को सब्र और तहम्मुल के साथ इसके साथ लड़ना है. अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से यकीनन एक ये मुश्किल सिचुएशन है जो कि हमारे अमाल की वजह से आई है. So the situation demand us that we should clearly watch कि हम सब ने मिलकर कौन कौन से ऐसे अमाल किए हैं जिनसे अल्लाह सुब्हानो ताला नाराज़ हैं और उनको हमने तर्क करने की कोशिश करनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल मिनहसुल कौम हमने नमाज़ पढ़ने में बड़ी कोताही की है, नमाज़ों में बड़ी लापरवाही की है. हम सब ने कितना सच बोलते हैं हम इसको भी जानते हैं. अमानतदार हम कितने हैं, हमारे अखलाकियात क्या हैं और कितने हलाल रिज़्क कमाने वाले हैं. यकीनन इन सब चीज़ों में हम सब ने मिलकर कोताही की है और इसको ठीक करने की ज़रूरत है. दूसरी चीज़ ये कि हमने सारे वो असबाब इख्तियार करने हैं जो कि इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए फ़ायदेमंद हैं और गवर्नमेंट का मुकम्मल साथ देना है. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अगर हम मुतालिया करें तो आपने भी ज़ाहिरी इसबाब को कभी नहीं छोड़ा. हमेशा अल्लाह पर तवक्ल किया, अल्लाह पर यकीन रखा. उनसे ज़्यादा अल्लाह पर यकीन रखने वाला इस कायनात में ना पैदा हुआ ना होगा. तो आपने भी ज़ाहिरी इसबाब को इख्तियार किया और तवक्ल हमेशा अल्लाह पे रखा. जितने जहाद आपने लड़े, कई जहाद में आपने ज़रा भी पहनी, तलवारों का इस्तेमाल भी किया और अच्छी प्लानिंग भी की और हर मुमकिन वसाइल को इस्तेमाल किया और फिर जो तवक्ल है वो अल्लाह पे रखा. तो लिहाजा हमने भी मुकम्मल इसबाब का इख्तियार करना है. अपने आप को लोगों के इज्तिमा में एक्सपोज नहीं करना. जो इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं उनका हमने ज़रूर ख्याल रखना है. सो इस मैसेज के साथ हम अपनी टॉपिक का आगाज़ करते हैं. हम वी वर डिस्कसिंग द स्ट्रीम फ्लो. आवर टुडेज टॉपिक इज़ focusing towards how we can measure stream channel flow. उसके लिए जो फार्मूला है that is Q equals to AV. This is the basic formula by which we measure discharge in streams. Area is the product of two components, width and depth. The depth we measure by two methods, by wedding rod if the channel is shallow, and if the channel is deep we have to use sounding method. What is this sounding method? We have to tie a stone with a rope and then we throw it in a channel. By this method we can measure the depth of a channel. So width, how we can measure? By measuring width, we divide the top width of the channel into several small components and then we measure the depth of each component and then we measure the discharge of each component and then we sum up all the discharges of each component by measuring the total discharge of the channel. So there are two methods, mid-section method and
mean section method, which are used for calculation of discharge. So please write down. As we saw that if a channel is shallow, we measure its velocity at a depth 0.6 d from the water surface. D is the total depth of the channel. This formula is used when the channel is shallow. Shallow means if the depth is less than 3 meter. For example, if the depth is 2.5 meter, so its velocity will be measured at a depth 1.5 meter from the top. This is called 1 point measurement. For deep channels, we take velocities at a depth 0.2 d and at a depth 0.8 d, and then we average the values of both the velocities. Similarly, if the channel is much deeper, then we use three measurements, one at a 0.2 d depth, second at a 0.6 d depth, and third at the 0.8 d depth. And then we use this formula V equals to 1 by 4 bracket start 0.2 d plus 2 times 0.6 d plus 0.8 d, and this is called 3-point measurement method. So if I sum up all these three formulas in one table, for shallow depth, if the depth is less than 3 meter, we use one observation and it must be at a depth 0.6 d from the surface, and formula for measuring velocity is 0.6 v. If the channel is deep, d is greater than 3 meter, we use two measurements, one at 0.6 one at 0.2 d, other at 0.8 d, and then we use formula for measuring the velocity. If the channel is much deeper, its depth is much greater than 3 meter, 15 meter, 10 meter, then we take three measurements, one at 0.2 d, other at 0.6 d, and third at 0.8 d, and then we use this formula to compute the velocity of the channel. Now we will solve one problem. For understanding of this, how we can measure the discharge in a stream using current meter and by midsection method. So the problem is a data is provided and a current meter having calibration equation 0.32 n plus 0.032 meter per second, where n is the revolutions per second. Current meter is an instrument. It has some uh, fan types uh, material that just like when fan rotate, similar mechanism is provided with the current meter. When the flow is moving, water is flowing with the velocity of water, the fan types, fans of the current meter also rotates. So n is the resolution of the current meter. So the problem suggests that the velocity at 0.6 d using midsection method is given.
So this is the data given in the problem. First column is the distance from the right bank. چلیں جی ہم کنٹینیو کرتے ہیں. دیر واز اے پرابلم ان دی نیٹ. We were discussing the problem statement. Some data was given. First column is the distance from the right bank of the channel, and second column is the corresponding depth. Third one is the number of revolutions which the current meter records, and fourth column is the time for measuring these revolutions.